Good morning, dear students. निरंजन प्रधान गुड मॉर्निंग समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु आपण माने जॉइन हो गले मैं क्लास स्टार्ट करबा। तो आज समस्त क्लास तो समस्त देखिकी बुझी जाइथिबो। बेसिकली तुमरा सीडी फ्रॉम मैराथन क्लास रहउची पिला माने तुमरा जहाँ भी क्वेश्चन नै कि बहुत सारा क्वेश्चन नै कि म आछि तुमरा काली रो एग्जाम पीसीएम पाई आशा करूची ए सब क्वेश्चन टिके हेल्पफुल होबो तुम मानक पाई। ता सहित तुमरा जो मानकर आर्ट्स रो अपकमिंग एग्जाम आसुची कि अदर एग्जाम्स जोउतरे भी तुमरा सीडी भी आसुची तुमरा निहाती भाबरे हेल्पफुल होबो। एंड ए क्वेश्चन माध्यम रु तमे करबा माध्यम रे मु जानची कि काली सखाळे माने तुमरा सेकंड हाफ रे एग्जाम अछि पैनिक नेक्स्ट बढ़ुथबो तथापि आशा करूची तम मानकर टिके टिके कॉन्फिडेंस बूस्ट होबो कि ना हमें करि पारिबु। ओके तो डेरी न करके पिला माने तांकर जॉइन हेबे आमे हमर सेशन स्टार्ट करि दबा। प्रणाम कमल। तो स्टार्ट करबा पूर्वरु आ गोटे कथा जो माने भी हम चैनल देखुछंदी एवं एसएसबी टीजीटी एवं आरएसटी पई हम सहित जॉइन होबा पई चाहूछंदी आर्ट्स होंतु पीसीएम होंतु सीबीजेड बा हिंदी बैकग्राउंड रो तो तले दिया जाइथिबा कांटेक्ट नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करिके बुझी पारिबे कि 8093073341 और 42 नंबर रे। तो जोटा कि आपण मन पई एठी अछि कांसेप्ट सहित एमसीक्यू यूनिट टेस्ट वीएसटी टेस्ट सीरीज विथ सॉल्यूशन क्लासरूम पीडीएफ लाइव क्लासेस डाउट क्लियरिंग सेशन वैलिडिटी 6 मंथ पई 1999 एंड 1 ईयर पई आपण को रहउची 2999। तो एबे आ लेट न करके हमरा क्लास स्टार्ट करबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नु पिला माने तो फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एटी जो चारटा स्टेटमेंट दिया हेची ए चारोटी स्टेटमेंट भितरु केउंटे ट्रू। पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट्स। ऑप्शन बी पीपल लर्न एट ओनली वन लेवल। ऑप्शन सी पीपल लर्न एट ओनली मॉडरेट रेट्स और डी पीपल लर्न एट द सेम रेट्स। कोडा हबो पिला माने हेलो निरंजन है एनीवन एल्स मंदाकिनी ओके एस पिला माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट्स काहे ना समस्त इंटेलिजेंस पावर समस्त थिंकिंग लेवल जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट थाए आमे समस्त डिफरेंट रेट्स रे ही लर्निंग करि थाउ बा किछि सिखि थाउ। नेक्स्ट बा the 4 types of learning styles that is visual, auditory, reading or writing preference and kinesthetics are referred to as what? कि WARKV ना VARCC WARCD ना VARK। प्रणाम मंदाकिनी तो कोटा ए भितरु हबा समस्ते टिके आंसर दबाकू एंड माने पार्टिसिपेट करिया को ट्राई करंतु। देखुचे एठी कि पिला देखुछंदी क्लासेस एले आंसर दोउनांती आपण आंसर देले मु नै जिबि कि VARK विजुअल ऑडिटरी रीडिंग और राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक गोटे गोटे जगह रे VART मध्ये कुआ जाए टी रे होची टैक्टाइल। तो कंफ्यूज हेबे नहीं जदि आपन को VART दोउची एंड एठी टैक्टाइल भी दोउची आपन VART मध्ये चूज कर देई परिबे ना कि VARK हमें जानिचु VART नबनी सेमते किछ नुह। देन होची इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच असेसमेंट इज ऑलवेज व्हाट फॉर्मेटिव समेटिव प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक। गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे असेसमेंट केमिति हबा दरकार फॉर्मेटिव समेटिव प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक। बी ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे फॉर्मेटिव ऑलवेज हबा पिला माने ये यस निरंजन फॉर्मेटिव एंड मंदाकिनी मध्य
ए हम कहीं ना आम कंस्ट्रक्टिव माने कौन कौचे आम गोटे नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करवा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस रे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रे जेते बेले तुमे पढ़ाउछ तुमे बार बार फीडबैक एंड असेसमेंट मेथड रे पढ़ाइबा द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करबा इजियर होइथाय। तो फॉर्मेटिव तो एइथु आमे देखिदबा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन ऑनगोइंग असेसमेंट ongoing or during the session, then summative माने कौन end term examination बा course end, then आपनकर prognostic माने कौन future prediction, आउ एटा diagnostic माने कौन तुमरो जानिबो identify learning difficulties किछु वीकनेस बा तुमर कौन स्ट्रेंथ रही से सब डायग्नोस्टिक असेसमेंट द्वारा आमे जानी पारिबा जोटा कि तुमर ऑलरेडी पिला माने आसीथिला सीबीजेड एग्जाम रे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहिले आमे कौन बुझी थाउ। तो ये चारटा को टिके भलसे जानिथिबो किछि किछि स्मॉल स्मॉल टर्म रे फॉर्मेटिव ता बेले बेले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन न गोटे गोटे देइथे डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भितरे आमे कंफ्यूजन हे जाइथो जेमते आमे कहू कि एंट्री बिहेवियर माने कौन आमे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करि थाउ एंट्री बिहेवियर छुआर जानिबा पई। तो ये जो शॉर्ट टर्म गुडा टिके मन रखिथिबो काहेकि ना तुमको केते बेले आमे भाबु जे क्वेश्चन हार्ड आसीबो किंतु क्वेश्चन लेवल एते इजी आसुची तुम पई केते बेले भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देकी किछि गोटे क्वेश्चन दे देइ थाई पारे एंड ऑप्शन एमिति दोउची कि ऑप्शन ने आमे कंफ्यूजन हे जबा गोटे गोटे वर्डिंग रे ही आम भीतर कंफ्यूजन स्टार्ट हे जाउची। तो नेक्स्ट जिबा कि the method of finding through experience is what? Demonstration method ना lecture कम demonstration method ना problem solving method ना heuristic or discovery method कोटा हबो बिले कि the method of finding through experience is most appropriate कोटा हबो निरंजन ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन हम पिला माने एठी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तुमर ऑप्शन डी बा डिस्कवरी मेथड हबो एंड डिस्कवरी मेथड काहे कि एठी हबो पिला माने तमे ह्यूरिस्टिक एंड डिस्कवरी मेथड रे जेते बेले लर्न करूछो ऑब्वियसली तमे गोटे डिस्कवर करबा समय रे ही तमरो कोन करूछो प्रॉब्लम सॉल्व करूछो डिफरेंट प्रॉब्लम किछि गोटे नुवा जिंस डिस्कवर करबा जेते बेले ट्राई करूछो निजे निजे सेइथरे इन्वॉल्व रहूछो निजे निजे प्रॉब्लम सॉल्व करूछो एंड लास्ट को तमको गोटे सॉल्यूशन बा फाइनल रिजल्ट मिलुची बा आउटकम मिलुची सो दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग देइची एठी कंफ्यूजन हे जिवो तमे तो सेति लागि तुमको बाछिबार अछि कि कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट बा कि कार्ल रोगर्स बिलीव इन व्हाट कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन ऑप्शन बी कांसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑप्शन सी कांसेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग ऑप्शन डी कांसेप्ट ऑफ डेलीगेशन कार्ल रोगर्स बिलीव इन व्हाट एठी भी तुमको कंफ्यूजन करी तमे आंसर दो पूरा पूरा करेक्ट आंसर ही अछि पिला माने एठी कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस बा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऊपर ही कार्ल रोगर्स कहि छंदी तो तार अप्रोच अनुसार ही ता आंसर ता शो करछि किंतु देखो ता कांसेप्ट भीतर सेल्फ लर्निंग मध्ये अछि सेल्फ अवेयरनेस मध्ये अछि तो तमे कोन भाबिबो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मध्ये अछि तो एठी ही तुमको कंफ्यूजन कर दोछि तो तुमको एही भीतर बाछिबार अछि मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन ना कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड एटा गोटे प्रीवियस ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन एटा मु किछि निजे बिल्ड करिनी तमे कंफ्यूजन हबा पई। तो टीएलएम मेक्स लर्निंग व्हाट प्रैक्टिकल एंड फन फॉर चिल्ड्रन बोरिंग एंड एग्जॉस्टिव चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिमिलर एंड डिस्ट्रैक्टिंग टीएलएम मेक्स लर्निंग व्हाट प्रैक्टिकल एंड फन फॉर चिल्ड्रन बोरिंग और एग्जॉस्टिव चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिमिलर एंड डिस्ट्रैक्टिंग। ओके निरंजन कमल यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आमे जेते बेले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करूचे ता प्रैक्टिकल एवं फन फॉर चिल्ड्रन बा एन्जॉयबल हेई पारुची। ओके नेक्स्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन इन लर्निंग ऑप्शन ए it involves thinking about one's own thinking and learning process option b
It discourages students from reflecting on their learning. Option C, it emphasizes the importance of rote memorization. Option D, it refers to the process of memorization. Okay. Yes, option A, metacognition माने कौन आमर ओन थिंकिंग उपरे आमर भावनाटा को आमे कहि थाउ metacognition. It involves thinking about one's own thinking and learning process. Okay, next jiba कि which of the following contributes to motivating children to learn. को जिनसडा children मानकु motivate करि थाए classroom situation ने better learning process पाई. Option Y रे देछि relevance of content to the child's life. Child life सहित जो content गुडा का relevant थाए ना fear of punishment ना punishment पाइबार भय ना autonomy in learning निजर learning करिया पई पिला मानकु autonomy ना encouragement and praise ना praise and encouragement कोडा हबा पिला माने. Option A, II and triple I. Option B, III and IV. Option C, III and IV. Option D, III and IV. Kamal, Niranjan, Rashmi Ranjan. Okay. Yes. Yes, पिला माने option B is the correct answer. III and IV कौन देछि motivating children. फियर फॉर पनिशमेंट हम ना केवल कहीं आउ सब गुड़ाक हम रिलेवेंस सब कंटेंट टू द चाइल्ड्स लाइफ जिते रिलेवेंट कंटेंट आम पढ़ाऊे ऑब्वियसली चाइल्ड रो मोटिवेशन डेवलप हम देन ऑटोनॉमी इन लर्निंग आम जदि ताकू निजे निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिया को छाड़ुचे ताहले तार मोटिवेशन इंक्रीज हम एनकरेजमेंट एंड प्रेज सब जिनस फीडबैक एंड एनकरेज एंड प्रेज करिया द्वारा येस तुम बहुत बढ़िया करुच एमि जदि कहीकि तुम मोटिवेट करुच ताहले गोटे चाइल्ड लर्न करिबा बट जदि आम पनिश भय देखौचे सेइथिरे केबे भी चाइल्ड मोटिवेट हेई परिबो नाही. द राइट आंसर होची III एंड IV सॉरी III एंड IV. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a relevant reason for assessing learners before presenting a lesson? Option A, to assess the readiness of the learners for a lesson. Option B, to make the learners aware before presenting a lesson. To facilitate teachers to practice core teaching skills. Option D, to form different learning groups among the learners while adopting collaborative teaching learning. रश्मि कहलेनी D, चित्तरंजन B. आउ कार कोन आंसर? मंदाकिनी D. पे ऑप्शन सी हम राइट आंसर. टू फैसिलिटेट टीचर टू प्रैक्टिस कोर टीचिंग स्किल्स सेटा देइची को गोटाक एमतर रिलेवेंट रीजन नुआ असेसिंग लर्नर्स बिफोर प्रेजेंटिंग ए लेसन. तो तमें जितेबाला लेसन लर्नर कथा पचारि असेसिंग करिया को चाहूच टू फैसिलिटेट टीचर्स टू प्रैक्टिस कोर टीचिंग स्किल्स या अंडर आसीबो नाही किंतु टू असेस द रेडीनेस ऑफ द लर्नर फॉर ए लेसन लर्नर तो रेडी नथिबो तमे जाई के गोटे लेसन केबे भी प्रोवाइड करि परिबो नाही. टू मेक द लर्नर्स अवेयर बिफोर प्रेजेंटिंग ए लेसन तुमे तांको अवेयर करिवो जितेबाला लेसन टे प्रेजेंट करछो ता पूर्वरु ता सहित तमे जितेबाला कोलैबोरेटिव टीचिंग करछो ऑब्वियसली तांको ग्रुप करिकि तमे गोटे ग्रुप रो डेवलपमेंट करिवो एमिति नुवा कि कोलैबोरेटिव टीचिंग कोथरे थाए ग्रुप वर्क रे ही थाए. तो जेतेबेले ग्रुप वर्क करछो सेतेबेले कोलैबोरेटिव टीचिंग करबो एते टीचर कथा केछि आसुनी ऑलरेडी तुमे ट्रेंड अछो तुमरो स्किल एनहांसमेंट हेइची एंड तुमे सेठी कि तुमरो स्किल एनहांसमेंट हेइची तुमे सेठी कि ट्रेंड बोली से जगह को जाइचो. ओके, नेक्स्ट होछि व्हिच ऑफ द थॉर्नडाइक्स लॉज एम्फसाइज प्रिपेयर्डनेस. कोटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ रेडीनेस. डी डी यस लॉ ऑफ रेडीनेस जोटा कि प्रिपेयर्डनेस आमे कहि परिबा पूरा आमे जदि रेडी अच्छे ताले आमे से जिनसटा को अटेम्प्ट करबा पई प्रिपेयर अच्छे. यस मंदाकिनी. नेक्स्ट थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस इज आल्सो नोन एज आमे कहले लॉ ऑफ रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस ताले से लॉ ऑफ रेडीनेस टा कोन आमे आ गोटे कहि परिबा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी ना लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड. कोटा बा बिले Thorndike's law of readiness is also known as what?
C. Samir. Kamal C. Yes. Option C. law of action tendency and law of action tendency माने फिलहाल कौन गोटे टेंडेंसी जोटा कि गोटे लर्नर को मोटिवेट करिबा गोटे लर्नर रे इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट करिबा जहा द्वारा कि तुमे मोटिवेट हबा बा तुमे रेडी हबा गोटे पर्टिकुलर एक्शन कंडक्ट करिया बाई बा लर्निंग प्रोसेस को आगो को नबा बाई ओके तो लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी होची लॉ ऑफ रेडीनेस रा आ गोटे नाम बा आमे लॉ ऑफ रेडीनेस को जानू छे लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी हिसाब रे ओके नेक्स्ट जीवा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें समस्त जानिचे हमें पढ़ीचे ताले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को मध्ये हमें आउ कोन कहि परिबा पिले ऑप्शन ए विकारियस लर्निंग ऑप्शन बी मॉडलिंग ताटी कोन हम ओनली वन ना बोथ वन एंड टू ना ओनली टू डी नाइदर वन नॉर टू कोटा हबो पिले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज आल्सो नोन एज व्हाट ओके मंदाकिनी नेक्स्ट कमल बी राजीव बी ओके यस बोथ हबो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को आमे मॉडलिंग माध्यम रे ऑब्जर्वेशन करूची जोटा बांदुरंगर थ्योरी थिला आमे ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग मॉडल बा माने इमिटेशन को देखि कि सिखिताऊ एंड विकारियस लर्निंग रो अन्य नाम होची ऑब्जर्वेशन मेथड तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज आल्सो नोन एज विकारियस लर्निंग एंड मॉडलिंग नेक्स्ट some children show a sudden leap in moral reasoning when exposed to role models or moral dilemmas. This situation supports which developmental debate? Option A heredity versus environment. Option B continuity versus discontinuity. Option C nature versus nurture. Option D differentiation versus integration. कोटा हबो पिले कि से माने कौन करूथानी मोरल रीजनिंग सहित एक्सपोज टू रोल मॉडल्स और मोरल डिलेमास ताले ए जिंसटा कौन शो करि थाए सीक्रेट स्टडी सी 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 एतरो जाना पड़ला के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को प्रैक्टिस आपण माने करी नाहांती तो यार ऑप्शन ए हबो पिला माने हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट तो मोरल रीजनिंग बा थिंकिंग आमर जो इंटेलिजेंस पावर कहूचे somehow some intelligence power come from our heredity and आमर जो मोरल डिलेमास बा कंफ्यूजन बा फियरनेस बा जोटा राइट एंड रॉन्ग रो डिफरेंशिएशन हमें सेटा को एक्वायर करूचे आमर एनवायरनमेंट रो आमर जहां या भीतर कंफ्यूजन बा किछि गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग रहूची सेही सब आमर हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट अनुसार ही हेची कि मोरल रीजनिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू रोल ऑफ मॉडल्स और मोरल dilemmas so option A is the right answer heredity versus environment okay next demonstration method works on the principle of what child centeredness activity centeredness or lecture method only 3 1 and 2 1 2 and 3 now only 1 कोटा correct होबो पिला माने demonstration method works on the principle of what 1 and 2 किए कहउछंदी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक्टिविटी सेंटरनेस पिला माने एडी ओनली 3 हबो देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ता हमर जो लेक्चर मेथड तमानकर सिलेबस रे अछि तो सेही सिलेबस रे क्लियरली मेंशन अछि लेक्चर मेथड कोन फॉलो करके पढै थांदी ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कम्स अंडर लेक्चर मेथड पूरा पर्टिकुलरली मेंशन अछि तो ए जिंसटा होछि तमरो ऑप्शन सी हबो किंतु एटा जते बेले भी तमाने कहबार रीजन मु बुझी पारुछि कि ऑब्वियसली तुम प्रीवियस ईयर पढ़ी एंड सेठी मध्य कहुई एटा गोटे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सॉरी चाइल्ड सेंटर्ड नुह एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड हो पारिबो ता सहित लेक्चर मेथड हो पारिबो तुम आंसर की रे आसीथिला बट देखो आंसर की तो बहुत जिंस आसी सीबीजेड रे भी तुम निजे देखिछो बहुत सारा क्वेश्चन ठीक अछि किंतु आंसर की रे से आ गोटे आंसर देइछंदी तो सही हिसाब रे तमर एठी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हबो ओनली 3 दैट इज लेक्चर मेथड नेक्स्ट ए पर्सन्स अमाउंट ऑफ लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट maturation repetition readiness na motivation a person's amount of learning mainly depends on what maturation repetition readiness na motivation
वेरी गुड पिला माने मोस्ट एप्रोप्रिएट एटी मोटिवेशन हबो एंड मोटिवेशन काहेंगे हबो बुझंतु कि देखो मैच्यूरेशन आपन को दरकार लर्निंग पाई कहीं ना आपन मेंटालिटी से डेवलपमेंट न होते माइंड से मैच्योर हो नथिले आपन लर्निंग करि परिबे नाही एंड आपन को गोटे लर्न पाई रेडीनेस मध्य दरकार एंड ता सहित आपन जदी रेडीनेस खाली थिले हबनी जदी आपन छाडी दउछंदी पुनी थरे 3-4 दिन परे आपन को आसी से जिंसटा रिपीटेडली पढिबा को पड़ची नहले हबो नाही किंतु एठी सब गुडा तो इंपोर्टेंस अछि ताले हमको बाछिबा को हबो कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड कोटा मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये हूँ मोटिवेशन कहीं जदि तुम मोटिवेशन नाही तुम जिते मैच्यूरेशन थाउ तुम्हें लर्निंग कर ना रिपीटेशन मोटिवेशन तो नाही तुम रिपीटेशन करने कौड़ जिनसा आसो जदि तुम्हें लर्न करने मोटिवेट ना ताले रेडीनेस बोली जिनसा कौड़ आसो तुम्हें मोटिवेट हेले तो तापर रेडी होकर पढ़ा जाए ना तो यही चार्टाक ऑप्शन भितर मोटिवेशन इज द मोस्ट पावरफुल आउ एप्रोप्रिएट आंसर जोड़ा कि ए पर्सन अमाउंट ऑफ लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन ओके नेक्स्ट जीवा के पीयर टू पीयर लर्निंग एनकरेजेस व्हाट इंडिविजुअलिटी कोलैबोरेशन कंपटीशन और जेलसी पीयर टू पीयर लर्निंग एनकरेजेस व्हाट यस निरंजन yes collaboration obviously group work collaboration obviously हमें पढ़ के आसले तो peer to peer learning encourage collaboration cooperation method okay next जीमा कि when learning is concerned with perception it is known as what verbal learning sensory learning concept learning discrimination learning when learning is concerned with perception it is known as what ऑप्शन ए हम पिला माने करेक्ट जोटा तुमर परसेप्शन सहित रिलेटेड दैट इज वर्बल लर्निंग सिस्टम सेंसरी हबनी नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स level of the questions and marks allotted in the test construction is known as what test conceptualization schematic test na blueprint na master plan कोटा हबो ओके ब्लूप्रिंट ऑप्शन सी ताले ब्लूप्रिंट रो अन्य नाम पिला माने कोन ना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें कहि परिबा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 3-dimensional chart तो माने कौन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 3 डायमेंशन कौन रहला टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड तमरो कौन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तमरो रहउची तो जदी खाली ब्लूप्रिंट न पचारे कि तुमको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दउची तमे मध्ये करि परिबो ता सहित 3 डायमेंशनल चार्ट मध्ये हेई परिबो ओके नेक्स्ट students are paired to check the accuracy of each other's spelling in a detection test is called periodic assessment na creative assessment ना इन्वॉल्व्ड असेसमेंट ना पीयर असेसमेंट प्रणाम धरित्री एटा कोन हम जेते बेले स्टूडेंट्स पेयर्ड हे कि तांकर एक्यूरेसी जणे आ जणकर चेक करि थांदी यस दैट इज ऑप्शन डी पीयर असेसमेंट रे गोटे पीयर आ गोटे पीयर एक्टिविटीज को असेस करबा को लागि थाए नेक्स्ट इवैल्यूएशन इज कॉल्ड व्हाट measurement plus judgment na measurement plus testing na measurement plus evaluation na only measurement सी के देलेनी इवैल्यूएशन तो अरे तमे जानी न कि मेजरमेंट माने न्यूमेरिक्स एंड तमे कौन जानछ कि इवैल्यूएशन इज ए वैल्यू जजमेंट प्रोसेस तो इवैल्यूएशन प्लस जजमेंट इज द करेक्ट आंसर मेजरमेंट माने मेजरमेंट प्लस इवैल्यूएशन की आंसर की देला सेटा रश्मि देले
ना ना सेटा हबोनी मेजरमेंट प्लस जजमेंट हबो इवैल्यूएशन मींस ओके Carl Rogers is well known in the field of what? Humanistic approach of learning, development of the whole person, new age psychology, experimental psychology. Yes, option A, that is humanistic approach of learning. Next, which learning theory emphasizes the role of observation and imitation in the learning process? Behaviorism, constructivism, humanism, cognitivism. Koda? Yes, self-centered. Which learning theory emphasizes the role of observation and imitation in the learning process? Niranjan. ओके अन्य माने टिके आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर दियो धीमे धीमे गले हबो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पिला माने बिहेवियरिज्म तमे पाब्लम गर भी पढ़ी थिबो कि कोन अछि ऑब्जर्व करिवे देन इमिटेट करिवे जहा देखिबे सही अनुसार तांकर रेस्पॉन्स आसीबो घंटी बाजिया देखिले ही तार सलाइवा बाहरिबो से धीरे धीरे से जिनसटा को इमिटेट करबा सिखि जाई थाए पुणी किछि दिन पर सेटा बंद हे गले से सेटा को भूली जाई थाए पुणी थरे तार रिपीटेशन मध्ये हेई पारे थाए तो ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म इज द राइट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म नुहे देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो ए भितरु कोडा एग्जांपल मिड टर्म एग्जाम वीकली क्विजेस फाइनल प्रोजेक्ट ना ईयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सॉरी पिला माने मिड टर्म एग्जाम ना वीकली क्विजेस फाइनल प्रोजेक्ट ना ईयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यस आकाश वेरी गुड ऑप्शन बी दैट इज वीकली क्विजेस कम अंडर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट आ सब तक हमर समेटिव असेसमेंट अंडर रे आसीबो नेक्स्ट बा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रूब्रिक्स इन असेसमेंट हमें रूब्रिक्स तापरे चेकलिस्ट सब पढ़ी जे ताहाले सी रूब्रिक्स रा असेसमेंट रे कोन मेन रोल रहूची ऑप्शन ए टू असाइन ग्रेड्स एंड रैंक्स टू द स्टूडेंट्स ऑप्शन बी टू क्रिएट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स ऑप्शन सी टू डिस्करेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज ऑप्शन डी टू प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट दोस क्राइटेरिया प्रणाम जगदीश yes option D is the correct answer to provide some criteria जेमति कि हमर किछि ओडे डिबेट कंपटीशन हो एसे कंपटीशन हो टीचर बानो किछि स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमें देथौ एही क्राइटेरिया अगेंस्ट रे ही आपण से पिला को 5 रु 4 देबे किबा 5 रु 3 देबे 5 रु 2 देबे एही बळी भाबरे असेसमेंट हेई थाए गुड मॉर्निंग रंजन सिम्पोजियम इज ए मेथड ऑफ व्हाट डिस्कवरी मेथड डिस्कशन मेथड लेक्चर मेथड ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड very good option B is the correct answer discussion method next ba कि which of the following is an example of a performance based assessment tax को गोटाक ए भितरु performance based assessment tax अंडर रे आसीबो पिले multiple choice test option B essay exam option C science experiment option D true or false quiz performance based assessment tax धरित्री रश्मि पिला माने परफॉर्मेंस रे हबो साइंस एक्सपेरिमेंट जो थरे तमे किछि गोटे परफॉर्मेंस दोउछ बा तुमरा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यूज हे कि आमे जोटा कहि परबा कॉम्पिटेंसी डेवलप होउची कॉम्पिटेंसी बेस्ड बा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होउची जो माने ऑप्शन सी देछ साइंस एक्सपेरिमेंट ओके नेक्स्ट होउची व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पोर्टफोलियो असेसमेंट गोटे पोर्टफोलियो असेसमेंट रो मेन पर्पस कोन रही छी ऑप्शन ए to measure students achievement at the end of the time
Option B, to provide feedback to students' performance. Option C, to evaluate students' progress over time. Option D, to rank students relative to one another. कोटा हबो? आशा? Yes. तो ऑप्शन सी जो माने दउछन्ती पिला माने पोर्टफोलियो माने कोन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम को गुडा का प्रोग्रेस सब प्रोग्रेस तापन एडा ऑप्शन सी हबा ऑप्शन ए हबनी एंड ऑफ द टाइम हबनी पोर्टफोलियो असेसमेंट माने आंसर होची कि टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम माने कोन जो गुडा का स्टूडेंट्स रो बेस्ट अचीवमेंट हेची सेटा टीचर बा स्टूडेंट्स मध्य करि परबे स्टूडेंट्स निजर बेस्ट अचीवमेंट ओवर टाइम कोन कोन से गोटे होल ईयर रे किबा गोटे एकेडमिक इयर्स रे करि करि आछचंदी निजर मध्य करि पारिबे तो निजर मध्य कोन करि पारिबे टीचर मध्य करि पारिबे कि स्टूडेंट कोन बेस्ट एक्टिविटी करछि प्रतिटी स्टूडेंट तांकर कोन कोन एकेडमिक इयर रे बेस्ट एक्टिविटीज करछंदी ओवर टाइम गोटे एकेडमिक सेशन गु नै कि that is portfolio assessment. Okay, next ba setting goals and deciding strategies of teaching occurs in which phase of teaching. Setting goals and deciding strategy को phase of teaching रे हमर हेई थाए. Option A interactive phase, option B post active phase, option C exit phase, option D pre active phase. कोटा हबो पिले सुरेश? ओके ओके मंदाकिनी आशा बहुत दिन पर मु आशा को लाइव वीडियो रे देखुची लास्ट जेबे हमर लाइव हेइथिला मु सेबे बदे देखिथिली ओके डी करेक्ट आंसर पिला माने प्री एक्टिव फेज रे जते बेला हमें पिलांग सहित इंटरैक्टिव करिने माने हमें कहूचे कि हमर प्रिपरेशन स्टेज चली छी हमें जते बेला लेसन प्लान बनोचे सही टाइम रे ही हमें कोन करिथौ हमर गोल सेटिंग हमर ऑब्जेक्टिव कोन हमर लर्निंग आउटकम कोन होबा दरकार तो सही जिंस गुडा को हमें फिक्स करिथौ हमर लर्निंग स्ट्रेटजीज केमिति करले हमें गोटे आउटकम टा को अचीव करि परिबा ओके नेक्स्ट According to Brunner, which type of learning plays a crucial role in enhancing creativity of an individual? Child learning, active learning, service learning, or discovery learning? Yes, option D, that is discovery learning. Next, the concept of anima and animus was given by whom? Option A, Carl Jung, option B, Rogers, option C, Maslow, option D, Spencer. The concept of anima and animus was given by whom? आकाश कहि सरलेनी कार्ल जंग. नेक्स्ट के yes पिला माने ऑप्शन ए होची कार्ल जंग एंड हियर एनिमा मीन्स कोन कि मेल मानंग पाखरे फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कि जेमिति आमे कहूचे माने जोडा हमर दया श्रद्धा एई गुडा को फाइनली कहा पाखरे देखा जाए फीमेल मानंग पाखरे जो जहा फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि एनिमा मीन्स सेई गुडा को मेल पर्सन मानंग पाखरे शो करबो एंड एनिमस मीन्स फीमेल पर्सन मानंग पाखरे जोड़ा मेल पर्सन सब गुड़ाक डोमेन रही एक्टिविटीज रही किछि किछि जो मेन रो अनकॉन्शियस पार्ट तो आम भितर फीमेल हेले भी किछि मेल रो अनकॉन्शियस थिंग आम भितर मध्य अवेलेबल थाए सेटा को आमे एनिमस को एंड एनिमा मीन्स मेल पर्सन मानक मध्य मध्य फीमेल मानकर किछि ना किछि कैरेक्टरिस्टिक्स थाए जोड़ा कि हिडन अवस्था रे थाए से माने शो ऑफ करंदिनी किंतु तांका पाखरे मध्य किछि ना किछि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल थाए ओके प्रणाम मिजु नेक्स्ट जीवा कि the statement in a multiple choice type is known as distractors, stem, decoys, foils. Statement जोड़ा रहउची multiple choice question ने सेटा को हमें कौन कहूचे yes
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टेम। एंड जो गोटे राइट आंसर को ठाई कि आउ तीनटा एक जिनस रहउची से ऑप्शन तीनटा होची डिस्ट्रक्टर हमर गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने। क्लियर? नेक्स्ट बा कि which of the following is not related to the achievement test? गोटे achievement test सहित ए मध्यनु कोउटा related नुह। Pupil score on a certain school subject, ना one's learning attainments, ना identification of specific learning difficulties, ना D one's knowledge understanding skill in a specific subject। कोउटा हबो पिले? कोउटा achievement test अंडर रे आसीबो नाही। Very good। यस ऑप्शन सी। ताले ऑप्शन सी टा हमर कोन आसीबो तमरो? ऑप्शन सी टा कहा अंडर रे आसीबो तम माने आंसर दियो। नेक्स्ट, which of the following is not an aspect of item analysis in a test construction? कोटा item analysis रा गोटे aspect नुह। वेरी गुड आकाश। ऑप्शन ए determining validity, ऑप्शन बी difficulty index of the item, ऑप्शन सी discriminating index of the item, ऑप्शन डी internal consistency with the whole test। कोटा हम? यस धरित्री, दैट इज डायग्नोस्टिक। तो एटा कुआ कोटा गोटे एस्पेक्ट नुह आइटम एनालिसिस जेतबेले हमें करूचे टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने आसा। ओके यस पिला माने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर डिटरमाइनिंग वैलिडिटी। आउ तीनटा एक्शन थाए आमे डिफिकल्टी लेवल देखि कि आइटम बनै थाउ ता सहित डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ द आइटम जेतेबेले आमे आइटम एनालिसिस करि थाउ ना सेतेबेले जोटा इंडेक्स रे आमे लागू डिफिकल्टी कि इनएप्रोप्रिएट सेटा को आमे डिस्क्रिमिनेट करिवारे व्यवस्था मध्ये थाए टेस्ट कंस्ट्रक्शन समरे। इंटरनल कंसिस्टेंसी विथ द होल टेस्ट। इंटरनल कंसिस्टेंसी माने जेमति कोनोसी रिपीटेशन हेइ नथिबो, कोनोसी वैग्यू लैंग्वेज यूज हेइ नथिबो, तापरे सेटा आर्बिटरी शो करू नथुबो। तो एही सब भाबरे देखिकरी ही आमे गोटे आइटम एनालिसिस करि थाउ जेतेबेले टेस्ट कंस्ट्रक्शन करि थाउ, किंतु सेतेबेले तार वैलिडिटी देखिकरी डिटरमाइनिंग वैलिडिटी देखिकरी आमे केबे भी आइटम एनालिसिस करि नथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of assigning numerals to objects according to some rules is termed as what? Observation, measurement, assessment or evaluation? कोटा बपिले? The process of assigning numerals to objects according to some rules is termed as observation, measurement, assessment or evaluation? Yes, option B, that is measurement. Next, the assessment focuses on students' reflection on their own future learning goal is known as what? Assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning, all of the above. Code above? Yes, Akash, Tapan, Rasmi, Manoj. It have option C, that is assessment as learning. Kahin ko jachi? The assessment focuses on students reflection on their own future learning. माने तुमे students तुम्हारा future learning विषय तुम्हारा own reflection, तो जेतबेले own reflection, own analysis, own judgment बा own feedback that comes under self assessment. Okay, next ma'am, कि in dynamic assessment process, assessment is what? Continuous and interactive, rigid and concept related, material and method based, none of the above. कौन हबा पिले? Yes, that is option A, continuous and interactive in a dynamic assessment process. Next, which of the following is not a feature of the teacher made test? कोटा गोटे feature नुआ गोटे teacher made test रा. Items arranged in order of difficulty,
The test cover the whole content, then required sophisticated technique for preparation, now employed on a tool for formative evaluation. कोटा हम पिला माने आकाश कहले डी यस तपन रश्मि निरंजन yes option C पिला माने देखो items arranged in order of difficulty teacher मध्य सेटा करि थांदी test cover the whole content obviously teacher पढेले माने तम syllabus cover करिकि पढेले employed on tool of formative evaluation obviously से जो unit test ता करूछन सेटा कोन तमर तो automatically सेटा formative evaluation under आछी थोड़ी ना unit test ता summative से जो quiz भी करूछन सेटा comes under your formative evaluation but required sophisticated technique for preparation सेमिति किछ techniques बा tool नै कि से preparation पाई एते नथांदी जोटा कि तमरा स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे थाए एई प्रिंसिपल फॉलो हबो एई प्रिपरेशन थ्रो रे करा हबो कोनोसी भी सेमिति रिजिड प्रिंसिपल बा फॉलो करि नथांदी स्टैंडर्डाइज जिंस को सेटा टीचर मेड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह ओके नेक्स्ट बा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानिंग ऑफ टीचर मेड टेस्ट कोटा गोटे टीचर मेड टेस्ट रो प्लानिंग नुहे ऑप्शन ए डिटरमाइनिंग पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन बी डिसाइडिंग लेंथ ऑफ द टेस्ट option C preparation of test items option D specifying the objectives in behavioral terms कोड हबो option C is the correct answer preparation of the test items टेस्ट आइटम्स केते बेले प्रिपेयर करिवो प्रिपरेशन स्टेज रे ना जेते बेले सेकंड फेज रे तमे प्रिपेयर करूछो प्लानिंग स्टेज रे तमे काहे कि टेस्ट प्रिपरेशन करिवो किंतु प्लानिंग स्टेज रे तमे ऑब्जेक्टिव फिक्स करिथा पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ द टेस्ट तमे केते कोन कंटेंट नबो सेटा मध्ये डिसाइड करिथा कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स तमरा प्लानिंग फेज रे हेइथाय किंतु जेते बेले तमे ओडे क्वेश्चन प्रिपेयर करूछो बा ब्लूप्रिंट टा को पारे प्रिपरेशन करछो प्रिपरेशन स्टेज रे ना टेस्ट आइटम्स ता तमरो को फेज रे होउची प्रिपेयरिंग स्टेज रे तो आइटम ता तमरो काहेंगे प्लानिंग स्टेज रे आसबो तमे प्लानिंग स्टेज रे केवल ऑब्जेक्टिव कंटेंट लेंथ एगुडा को जस्ट जोडा कॉमन जिंस से गुडा को ही फिक्स करछो किंतु एक्चुअल क्वेश्चन बा टेस्ट आइटम्स तमे परवर्ती स्टेज रे फिक्स करूछो नेक्स्ट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीसीई तो धरित्री से प्रिपेयर करिवे सेटा देचे प्रिपेयरिंग जो जिंसडा टेस्ट आइटम्स जोडा डिफिकल्टी लेवल देखिकी प्रिपेयरिंग स्टेज रे से जिंसडा कोटा हबो नाही सेथरु तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीसी कहि दोची लास्ट को कहि देबी आउथरे reduces stress of students burden for the students C improves students performance helps in all round development yes option B burden for the student हबो नाही काइना एटा स्टूडेंट माने में फ्लेक्सिबिलिटी करि दोची एंड तांको burden reduce करि दोची a good observation requires what intelligent planning expert execution adequate recording all of the above yes option D all of the above next key portfolio involves the collection of what option A the students work selected to serve a particular purpose best works done by the students for particular purpose all the work done by the students D both A and B तपन all अच्छी माने all काली पो एग्जाम ना बापा तपन काली पीसीएम एग्जाम टी एठी गला पेडागोजी तक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर पिला माने द स्टूडेंट्स वर्क सिलेक्टेड टू सर्व ए पर्टिकुलर हमें
प्रीवियस क्वेश्चन ने बुझिले बा हमर जोटा होची कोन ना बेस्ट वर्क हेइथिबा हमर गोटे सेशन धरिकी जोटा पर्टिकुलर वर्क हमें फिक्स करथिबा कि एटा स्टूडेंट रो बेस्ट वर्क हमें होल ईयर रे सेटा को रखिले तो कोन हबो कि द स्टूडेंट्स वर्क सिलेक्टेड टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस जदी गोटे पर्टिकुलर पर्पस पई हमें सिलेक्ट करचे स्टूडेंट रो वर्क ता सहित बेस्ट वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स कि तार कोन कोन बेस्ट वर्क अछि सेही गुडा को ही हमें पोर्टफोलियो रे रखुचे ना ऑल द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स हबनी गोटे होलिस्टिक माने गोटे होल ईयर रे तमे आकाश केते सारा काम करि जाइथबो किंतु पोर्टफोलियो माने नुहे कि तमर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज को हमें सेही पोर्टफोलियो रे रखिबा हमें पोर्टफोलियो रे केवल स्थान देइथबो हमर कोन कोन बेस्ट अचीवमेंट वर्क हेई थाए सेही बेस्ट अचीवमेंट वर्क को हमें पोर्टफोलियो रे स्थान देइथौ नै कि हमर ऑल वर्क सेठी जेहेतु ऑल वर्क ऑफ द स्टूडेंट हेई छे सेथि लागि ऑप्शन सी न है कि केवल ऑप्शन ए एंड डी हबो तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट Which of the following is the first step in the test construction? कोटा गोटे test construction ना first step preparing a scoring key, writing test items, defining the instructional objective, non assembling the test. कोटा हबो Yes, option C is the correct answer defining the instructional objectives. Yes. Next jiba कि a test that measures what it intends to measure is said to have reliability, validity, objectivity, usability. कोटा हम पिले इटा तो समस्त धड़ा धड़ा आंसर दे दबो yes option B that is validity. Next the consistency of a test in yielding similar results over repeated trials refers to what? Validity, reliability, objectivity, transparency. हम सेटा validity हैला माने एटा reliability हबो yes option B reliability. Next which principle ensures that the scoring of test items is not influenced by personal biasness? Reliability, validity, objectivity, non-referencing. ट्राई कर समस्ते टिके आंसर दबा पाई यस ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी जोठी रुहे सेठी हमर पर्सनल बायस रहे बट ऑब्जेक्टिविटी रे हमर पर्सनल बायसनेस रही न थाए नेक्स्ट कि द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट टेस्ट आइटम्स कवर ऑल एरियाज ऑफ द सिलेबस इज नोन एज कंटेंट एनालिसिस blueprint ना standardization ना grading आनी सेटा किछि नै खाली वैलिडिटी कोन रिलायबिलिटी कोन सेही जिंसटार डेफिनेशन ही यस ऑप्शन बी दैट इज ब्लूप्रिंट नेक्स्ट इन a good test the difficulty level of items should be very high very low uniform ना moderate and varied गोटे ब्लूप्रिंट बा गोटे टेस्ट आइटम्स रे क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट लेवल केमिति हबा दरकार यस धरित्री पिंकी निरंजन yes moderate and varied according to situation context and level of the mind of the student कि को level लो question and को examination होउची तो केमिति question दवा दरकार then the process of evaluating the effectiveness of the test items is called scoring moderation item analysis or validation yes आकाश ऑप्शन डी हबा करेक्ट आंसर पिला माने वैलिडेशन यार आंसर माने कोन कि तमे इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट आइटम्स माने जोडा हमें कहूचे कंटेंट वैलिडिटी जोडा तो तमे वैलिडेशन तमे एई जिंसटा करबा को चाहूछ से जिंसटा हेइची कि नाही तमर जो वैलिडेशन तमे चेक करूछ सेटा होची इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट आइटम्स नेक्स्ट
A test that provides information about student performance in comparison to a set of standard is called what? Norm reference test, na criterion reference test, na diagnostic test, na placement test. Yes, norm reference test. Next one. Ki the principle that ensure a test is appropriate for the time allotted is called reliability, time feasibility, validity or usability. Kota babile? The principle that ensures a test is appropriate for the time allotted is called what? Yes, option D, that is usability. Next, if learning precedes maturation, it can result in what? Accelerated learning, wastage of time and energy, early mastery of skills, no negative consequences. एडी ऑप्शन बी हबा पिला माने एंड इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा मध्ये इंपोर्टेंट तमरा आसी पारे बुझिया को चेष्टा करो कि लर्निंग जदि मैच्योरेशन को प्रिसीड्स करूची एंड तुमे सेते बेले मैच्योर्ड हेई ना हो ताले तुमरो कोन हबो तुमरो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हबो तमे इंटरेस्टेड हबोनी तुमको एना मु कहूजी मु तुमको एना इनअप्रोप्रिएट जिंस आनी कि जतबेले पढेबा को ट्राई करबी एंड तुमरो एज से जिंस को पढिबा पई एबे तो तमे बहुत मैच्योर्ड हेई गलणी बट गोटे स्कूल छुआ को तमे सप्तम क्लास छुआ को जाई के 10th क्लास रो पाठ जदी कहबो प्लस 2 रो पाठ जदी कहबो एमिति भाबरे पॉलिटिक्स हेइतिला से पॉलिटिक्स रो किछि भी बुझबनी फ्रस्ट्रेशन आसीबो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हबो तो से जिंस प्रति तार कोनोसी आग्रह मध्ये रहबनी रिजिडिटी बढ़िबो जहा फल रे कोन हबो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी माने केवल समय नष्ट हेबा एवं शक्ति ही नष्ट हेबा ता बदल रे हमर किछि गोटे फ्रूटफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बा लर्निंग क्रिएट हेइ परिबा नाही ओके नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज independent of each other, maturation precedes learning, learning precedes maturation, interdependent and mutually influential. Yes, आंसर दबा को ट्राई करो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंस टू ईच अदर हमें मैच्योरेशन बिना लर्निंग टा पूरा परफेक्ट हेई परिबो नाही किंबा लर्निंग टा विदाउट मैच्योरेशन रे हेई परिबो नाही तो परस्पर को कोठी ना कोठी से माने इन्फ्लुएंस करि थांदी एंड परस्पर सहित इंटरडिपेंडेंट गोटे बिना आ गोटे इम्पॉसिबल नेक्स्ट कि which of the following best describes the core concept of trial and error learning as proposed by Edward Thorndike. Option A, learning occurs through a process of insight and sudden understanding. Option B, learning involves systematically applying a problem solving algorithm. Option C, learning is achieved by repeatedly attempting solution and gradually eliminating unsuccessful ones. D, learning is facilitated by observing and imitating others. कोडा हबो बिले अरे बाबा रे मु पढु पढु मोर एते सारा आंसर आसी गलानी यस ऑप्शन सी लर्निंग इज अचीव्ड बाय रिपीटेडली अटेम्प्टिंग सॉल्यूशन एंड ग्रेजुअली एलिमिनेटिंग अनसक्सेसफुल वन then individualized instruction is must to extend help the students with whom good social skills short span of attention with normal learning abilities or D good auditory perception कि individualized instruction is must to extend help the students with
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिला माने शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन. यस श्रेया सायरा सिंह. नेक्स्ट, in Pavlov's experiment the bell is considered a unconditioned stimulus, conditioned response, conditioned stimulus, the neutral response. कोटा हम Pavlov's experiment bell is considered as, yes, option C is the correct answer, conditioned stimulus. Next jiba, Pavlov's theory falls under which branch of psychology? Humanistic psychology, cognitive behaviorism, gestalt psychology. Option C, that is behaviorism. Next देखिबा कि how can classical conditioning be applied to reduce exam anxiety in students? Give exams in a strict formal environment. Option B, pair test situation with relaxation and encouragement. Option C, increase the difficulty of questions. Option D, avoid giving feedback after test. Yes, option B, that is pair test situation with relaxation and encouragement. Next, teacher claps her hands before giving chocolates to students. After a few days, students get excited just by hearing the clap. What principle is this example of? Operant conditioning, inside learning, classical conditioning, observational learning. Yes, classical conditioning. Next, a child begins crying upon seeing a white coat because a doctor once gave them a painful injection. This is an example of spontaneous recovery, stimulus generalization, operant conditioning, classical conditioning. Option D is the correct answer, that is classical conditioning. Next, who is considered the father of operant conditioning? Eval Pavlov, na V.F. Skinner, na John Watson, na Albert Bandura. Yes, option B is the correct answer, that is B.F. Skinner, considered as the father of operant conditioning. Next, what does validity in a test refer to? Consistency of the test result, time required to complete the test, or accuracy in measuring what it is supposed to measure. Option D, simplicity of the test. Kota haba pile? Yes, option C, that is accuracy in measuring what it is supposed to measure. Okay. Next, reliability refers to what? Measuring abstract ideas, consistency of test result over time, the length of the test. Option D, the number of questions in a test. Yes, option B, consistency of a test result over time. Okay. Next, which of the following is not a type of reliability? Test retest reliability, inter-rater reliability, phase reliability, parallel forms of reliability. Yes, option C. ताले मते को टेस्ट रिलायबिलिटी कौन इंटररेटर आगो अछि पढिबा एटा देखो. Which type of reliability involves administering the same test twice over a period of time? Split half reliability, parallel forms of reliability, test retest reliability, or inter-rater reliability. Yes, option C. अच्छा हमको गोटे आंसर मिली गला कि reliability involves administering the same test twice over a period of time, that is test retest reliability. ताले एबे मते कुआ split half reliability कौन, parallel forms कौन, inter-rater कौन. तुमे माने ही आंसर दियो, जदी न देई पारियो नेक्स्ट मु देबी. तुमे माने ही दियो, तुम सांग माने देखिबे कि split half कौन, parallel forms of reliability कौन, inter-rater कौन. एके स्पीड हाफ वन टेस्ट को दुईटा पार्ट रे कर दबा. यस, जदी तुमरो 50 मार्क रा एग्जाम होउची ताले तुमे ताको 25 एंड 25 दुईटा पार्ट करिके कंपेयर करिवो. खाली दुईटा पार्ट करिवोनी, सेटा को कंपैरिजन करिवो सेही मार्किंग सिस्टम टाको. ओके,
स्प्लिट हाफ हैला देन पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी कौन रे काली एग्जाम बा आंसर दो ना समझते same type of two different test yes parallel forms by equivalent आमे जोटा कहूचे तार माने होची कौन कि सेम ग्रुप पिला रहिबे ओके तमे कौन करिबा सेम जो जिनसटा रहिबो टेस्ट माने कौन सेम स्किल किंतु टेस्ट आइटम्स बा क्वेश्चन गुडाक तमर कौन हेतिबो डिफरेंट डिफरेंट जिनस हेतिबो एग्रीमेंट एमंग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सह करिबो ये तो तुमको क्वेश्चन पैटर्न टा डिफरेंट हेतिबो किंतु सेम स्किल आ सेम ग्रुप ऑफ पिलांग ऊपर तमर ए पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी अप्लाई करा जाउथिबो एंड इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी माने जो तुमको ग्रेडेशन करबा डिफरेंट पीपल को द्वारा आगु को अछि देखिबो ओके काळे आसी पारे सेथिलाई कहि देली एते हार्ड तो आसुनी तथापि जानी दे था कि a test can be reliable but not valid. This means what? It is not consistent but still accurate. It is consistent but does not measure what it's supposed to. C. It measures everything. D. It is neither reliable nor valid. कौन हमा? B. Yes, very good. It is consistent but does not measure what it's supposed to. Next. Which type of validity is assessed by correlating test score with a criterion? Face validity, predictive validity, content validity or construct validity? Option B, that is predictive validity. Next, face validity is what? Judged by lay person, statistically measured, the same as construct validity, more important than content validity. Face validity is कौन? Yes, option A, that is judged by lay person. केही भी गोटे फेस वैलिडिटी माने तुमर जोडा जिनसडा देखा होची वैलिडिटी टाकू सेटा ले पर्सन द्वारा मध्य जज करा जाई पारिबो construct validity is used when the test measures skills only suppress knowledge na hypothetical traits like intelligence or motivation language proficiency construct validity used when the test measures what बाबा रे ए सायरा सिंह तमे झियो ना पुओ मा बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया होची यस ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस और मोटिवेशन ओके व्हाट इज स्पीड हाफ रिलायबिलिटी एठी आसी गला गिविंग द टेस्ट ट्वाइस यूजिंग टू डिफरेंट टेस्ट देन कोरिलेटिंग स्कोर्स फ्रॉम टू हाफ्स ऑफ द सेम टेस्ट कंपेयरिंग टू रेटर स्कोर कोड हम yes correlating scores from two halves of the same test okay next inter-rater reliability is relevant when only objective tests are used multiple people grade the test is given twice the test has only one scorer आकाश होचंदी वेस्टर्न ओडिसा छुआ ताले यस ऑप्शन बी मल्टीपल पीपल ग्रेड द टेस्ट ओके नेक्स्ट if a math test includes English grammar question it lacks predictive validity content validity construct validity or concurrent validity जदि मैथ टेस्ट रे तुम इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन पाउछ ताले सेटा को वैलिडिटी लैक करूची यस ऑप्शन बी दैट इज कंटेंट वैलिडिटी
Which stage involves object permanence? Pre-operational, concrete operational, formal operational, sensory motor. Yes, option D, that is sensory motor. Next, egocentrism is a key feature of which Piagetian stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, or formal operational? Egocentrism is a key feature of which Piagetian stage? Yes, pre-operational. Good morning, Rohit. Okay. Logical thinking develops in the pre-operational stage, formal operational stage, sensory motor stage, concrete operational stage. Concrete operational stage. Next. Assimilation and accommodation are process of social learning, cognitive adaptation, conditioning and motivation. Yes, cognitive adaptation under a assimilation and then which of the following is not a Piagetian term? Scaffolding, schema, assimilation, equilibration. कोड Piaget कहना आंदी. Yes, option A, that is scaffolding, जोटा कि दिया है चे लेव वाइगोट्स्की द्वारा. Next, according to Piaget, learning is what? Teacher led, a passive process, a result of maturation and interaction. D, caused by reinforcement. Yes, that is option C, a result of maturation and interaction with the environment. Next, Vygotsky emphasized what? Independent learning, biological maturation, social and cultural influence on learning, reinforcement and punishment. Yes, option C, that is social and cultural influence on learning. Then the zone of proximal development is what a learner can do alone, what a learner cannot do even with help, what a learner can do with guidance, a fixed intelligence level. Yes, option C, that is what a learner can do with guidance. Zone of actual development hochi what a learner can do alone. Next, according to Vygotsky, which plays a crucial role in development? Biology, language and interaction, memory, intelligence quotient. Yes, option B, that is language and interaction is the most important element. According to Vygotsky, private speech helps in what? Memory loss, mental retardation, self-regulation and problem solving, peer competition. Yes, option C, that is self-regulation and problem solving. Next, Carl Rogers emphasized what? Reinforcement, memory and recall, self-actualization, scaffolding. Yes, that is self-actualization. Next, unconditional positive regard means what? Option A, encouraging all behavior. Option B, criticizing mistake. Option C, accepting the learner without conditions. Option D, giving conditional love. Yes, option C, accepting the learner without conditions. Carl Rogers' theory aligns best with what? Constructivism, behaviorism, humanism, cognitivism. Yes, option C, that is humanism. तो पिला माने यस क्लास ओवर एठी हेची तुम मानकर
क्लास शेष तो ऑल द बेस्ट सबू पीसीएम पिला मानक पई जाइकी काली समस्त एग्जाम रे भल कर मन ध्यान देगी एग्जाम दियो एंड होपफुली मोर तो पेडागोजी रे डाउट नाही छुआ माने बेस्ट करिवे एंड क्वेश्चन लेवल बहुत इजी आसुची तुम माने भल करि परिबो केवल पेडागोजी नुह तमर कंटेंट सब्जेक्ट मध्ये तुम मानकर बहुत भल जाऊ एई थरक तुम परिश्रम साकार हो आ तुम माने निहाती एग्जाम भल करके आस एंड काली एग्जाम आसला परे निहाती हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा केमिति तुमर एग्जाम हेइची तुम माने निहाती हमकु जणैबो तो यस उड़े दियो एग्जाम रे भगवान करंतु एथरक उड़े दियो आउ थरे एग्जाम दमाकु न पडू या परे याठू बेटर एग्जाम क्रैक करिवो किंतु आ टीचिंग एग्जाम हम स्कूल लेवल ले न दियो थरकरे स्कूल लेवल ले हेइ जाऊ तम परिश्रम रा फल निहाती तुमको काली मिलिबो क्वेश्चन लेवल भी सेमिति आसी थाउ जेमति कि तुम माने करि परिबो एते भी ट्रिकी न आसी थाउ यस तपन तुम निहाती करि परिबो तुम परिश्रम अछि तो समस्त को ऑल द बेस्ट काली पई पूरा स्ट्रेस फ्री रुह आउ एबे किछि न पढ़ी कि जदी किछि क्वेश्चन सॉल्यूशन करिया को चाहूछ किबा किछि डाउट रहि जाइछि कर किंतु एते हेक्टिक हे कि आज किछि पढ़नी पूरा कूल एंड काम रही कि काली को एग्जाम दबा पई जाओ निश्चित भाव रे बेस्ट हबो एग्जाम रो आसिला परे इवनिंग रे समस्त निहाती देखा हवा और डिस्कस करवा ओके अगेन ऑल द बेस्ट क्लास को एठी एंड अप करूछि पिला माने